लड़कियां जो होती हैं वो हर चीज़ की प्रॉपर तैयारी करती हैं, वो तो कहीं बाहर भी निकल रही हो। पहले से एक्साइटेड हो गई होंगी ये तो। मैं तो कहता हूँ लड़कियां तो वो हैं कि वॉशरूम भी जाना हो तो मेकअप करके जाएं। मतलब लड़कियों ने कहीं भी जाना हो, ज़्यादा हो रहा है, अच्छा वो भी निकल के मारेंगी आपको। अच्छा, लड़कियों ने तो कहीं भी जाना हो अपने आप को शीशे में भी देखना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है कैंडल लाइट डिनर कोर्स। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। तो टाइटल है कैंडल लाइट 7 कोर्स डिनर फॉर 1.5 लाख at Taj Mahal Palace, Mumbai. So start करते हैं। We have curated a 7-course menu across the Middle East with exclusive ingredients which have flown in from Greece, Spain, Turkey, Morocco, Lebanon, Cyprus. This is delicious. I am relishing some amazing Middle Eastern food, that too on this 24-karat gold Versace plate. This is Mumbai's most expensive private dining experience that costs 1.5 lakh rupees for 2 people. Comes with great views of the Gateway of India, the Arabian Sea, and super fine hospitality. Woo! Let's get You know, having a 6-figure salary every month might be a big deal for many. But spending on a 6-figure meal just in one evening, well, that's definitely not a crazy steal. Today on this episode of WanderLuxe, I am at the Ala Grand Taj Mahal Palace, Mumbai to savor a 7-course luxury dining experience that costs 1,50,000 rupees for 2 people. Now, what makes this dining so exclusive? I am all ready to find out. Adding to the luxe experience, the Taj Mahal Palace in itself is a heritage luxury hotel which overlooks Mumbai's iconic Gateway of India and is one of India's finest and original grand hotels in the world since the time of the British Raj, and is also going to complete 120 years next year. Needless to say, the Taj has been frequented by many notable guests. Jawaharlal Nehru, Oprah Winfrey, Indra Nooyi, Barack Obama, and many more established dignitaries that belong to the billion-dollar club. This place is for the elite. Let's get So I'm here at the Souk, a fine dining Mediterranean Middle Eastern restaurant on the 20th floor of the Taj Mahal Tower. And tucked away from the main restaurant is a private balcony where my intimate candlelit dinner will be held. It's called the Casa Blanca. It means White House in Arabic and is the largest city in Morocco. Oh, and I am welcomed with a red carpet and red roses that leads me to the Casa Blanca. And I am going to be pampered with a 7-course Middle Eastern feast. Unlimited time, unlimited food, just me and you. Wow, this is lovely. I have come in right before dinner time just to capture this gorgeous vibe. The blue sky, endless vistas of the Arabian Sea, and a view of the iconic Gateway of India right from the top of here while I am seated dining right here. Absolutely luxe. The private dining space is compact and cozy right next to the interactive kitchen where you can watch the chef live while he is preparing your meal. Now you might be wondering, why would anybody want to spend so much money on food? Well, guess what? People actually do. This isn't just regular fine dining. This, my friends, is exclusive luxury dining which comes with the best of the best. Starting with popping a vintage bottle of champagne that would otherwise cost you 40,000 rupees in a restaurant is now being served to me as part of my private dining experience. I get a personal butler and a private chef who's going to be preparing my 7-course meal. Oh, which by the way, I get to customize from over 30 different dishes comprising of veg
and non-veg options. Now, if you thought that the food was grand, well, check this out. Designer cutlery from the House of Versace and Christofle. I mean, a fork and knife alone would cost me half the price of this entire meal. Hello, chef. Good evening, ma'am. Welcome to Casablanca, the chef's table at the Taj Mahal Palace, Mumbai. Thank you so much. My team and we have curated a 7-course menu across the Middle East with exclusive ingredients which have flown in from Greece, Spain, Turkey, Morocco, Lebanon, Cyprus. And we are ready for and excited to serve you. I'm absolutely delighted for this Middle Eastern feast. Bring it on. The exquisite 7-course luxury dining experience starts off with an amuse, typically known as a mouth amusement, before the main dining. And the first course consists of a cold meze with traditional Middle Eastern dishes like the traditional hummus, where the tahini comes from Beirut and the chickpeas comes from Turkey, along with a labneh with avocado, muthabal and mahmara. Proceeding to the hot meze, which comes with authentic Middle Eastern delicacies whose names are rather not pronounced, but is absolutely delicious. The soup harira and a cheese pide, and I can definitely say it's an a la grande Middle Eastern feast. Well, I don't have a romantic date, but that's okay because I get to talk to you guys anyway. Moving on to the next course, which is the grilled halloumi that the Middle East is known for, with a saute of varied mixed vegetables and cheese. This is also one of the differences between fine dining and luxury dining, that every course you're going to be served with a new set of cutlery and sometimes different beverages depending on the course you're served. The beverage list starts with a vintage bottle of champagne, a cocktail of your choice, along with a premium white wine and red wine, which is all unlimited. Next up is a cold and refreshing guava peri-peri sorbet for a perfect palate cleanser. Coming down to the mains, which is the 6th course, I opted for their best lamb tagine and souk pilaf, which consists of Egyptian rice and a traditional stew preparation which is slow cooked for 4 hours to pack in all the flavors. Coming down to the 7th course, which is the desserts, consisting of a Middle Eastern style chocolate cigar and Taj's best baklava, the omali and a rose petal ice cream to go along with it. Ending my time with a hot cup of Moroccan tea. Well, I must say, this was one big, hearty and lip-smacking Middle Eastern feast that the plushest of the plush get to spend on. And I'm happy that I could even get a feast and a bite of this indulgence. The food, great views, beverages, hospitality, and the entire vibe in itself was an elixir. And I'm sure I'm going to sleep like a baby after this hearty feast. If you have any more such luxe experiences in mind, do let us know in the comments below. Until then, it's your girl Bianca Saurashri. I'll see you soon. Good night. जी जनाब 1.5 लाख का डिनर 2% के लिए ना। हाँ। अच्छा, कासाब्लांका बाकायदा चैप्टर भी पढ़ा है मैंने, वो तो हमने कुछ और ही स्टोरी सुनी थी, लेकिन शायद इसको नाम दे दिया गया है इस हिस्से को। अच्छा, दूसरी बात ये है, ताजमहल के बारे में तो खैर बात करना ही बेकार है, क्योंकि ताजमहल के बारे में कौन नहीं जानता, और उसकी लग्जीरियस जो एक इमेज है वो बहुत ही आम है, बहुत ही कॉमन है हर कंट्री में। शायद हम दूसरे कंट्री में बैठ के हम भी जानते हैं ताजमहल को। दूसरी बात ये है कि 1.5 लाख वाकई कोई स्पेंड करता होगा एक डिनर के लिए, आपको लगता है? जबकि वो कह रहे हैं डेली बेसिस पे आते हैं लोग। डेली बेसिस पे लोग आते हैं। अच्छा, जिनके पास है उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उन्हें कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप बताएं, पैसा वसूल है? लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो जो 1.5 लाख ले रहे हैं ना, वाकई वो 1 लाख तो लगा ही दे रहे हैं। 2 लाख मतलब मिसाल के तौर पे अगर 1.5 लाख ले रहे हैं तो शायद सी बात है 50% से ज़्यादा वो लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कटलरी जो थी ना, वो ही शायद जितना हमने पे करा उसके हाफ प्राइस की तो कटलरी, और डाइनिंग में जो डिनर सेट वगैरह रखा हुआ था, जो चीज़ें रखी हुई थी,
वही होंगी। अच्छा, फिर ये जो शेफ़ हैं ये कोई मामूली शेफ़ नहीं होते, जाहिर सी बात है। ये जो इतनी चीज़ें बना सकते हैं ये हर चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक तो टेस्ट तो हम नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा हम सिर्फ देख ही पा रहे हैं, सिर्फ देख ही पा रहे हैं। मैं सोच रही थी इतना कैसे खत्म होगा, काश हम भी वहाँ होते। अच्छा, दो चीज़ें, एक तो हम देख पा रहे हैं उस फूड के साथ जो आर्ट का काम किया गया है, उसको प्रेजेंट जिस तरीके से किया गया है वो तो नज़र आ रही है ना। उसको तो हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको तो हम देख तो पा रहे हैं। हाँ। तो वो एक बहुत आला लगी। बाकी ये है कि थोड़ा सा दे रहे थे, थोड़ी सी ये चीज़ मैं सोच रहा था कि यार इतनी से क्या पेट भरेगा। नहीं, मैं आपको बताऊं, फिर बताऊं ना आगे। हाँ। इतनी मर्तबा वो इतना लाए, वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, 7 कोर्सेस थे, ठीक है ना, मुख्तलिफ एरियाज के, डिफरेंट कंट्रीज के, ठीक है ना। अब जैसे एक खाएगा तो पेट भर जाएगा, तो एक मीठा पाकिस्तान का है, जैसे एक मीठा इंडिया का है, एक मीठा मोरक्को का है, एक मीठा लेबनान का है, तो वो जाहिर सी बात है इतना टाइप का है। अब एक भर के बॉल आपको पाकिस्तान का ही देगा तो वो कहाँ खाएगा। फिर कोई ऐसा ही है। तो जब आता गया फिर अंदाज़ा हुआ कि अच्छा थोड़ा इसलिए आ रहा है। अच्छा, एक और आप बात थोड़ा सा नोट करें कि किस तरीके से वो थोड़ी सी चीज़ को बना रहे होंगे, कितना टाइम लग रहा होगा, कितना मतलब उसमें मेहनत जा रही होगी। आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, आप उसको डिज़ाइनिंग दे रहे हो, आप उसको शेप दे रहे हो। अच्छा, उसकी एक चीज़ को, नमक मिर्च जो भी चीज़ें उसके अंदर डल रही हैं, स्वीट डल रहा है, उस सारी चीज़ों को आप उसको कैलकुलेट करना, बैलेंस करना, तो मतलब वाकई आप बहुत सही कह रहे हैं कि बहुत महारत का काम है। और ये कोई लल्लू बंचू शेफ नहीं होते होंगे, अपने आप में अपने काम में बड़े माहिर शेफ होते होंगे। अच्छा, ये वाले एरिया की बालकनी स्पेशल अपनी अलग दी गई। अच्छा, अरेबियन सी भी दिख रहा था। हाँ। और गेटवे ऑफ इंडिया भी दिख रहा था। तो वही कहनी थी कि आपको वो तो बता भी रही थी कि अब आपको आइडिया होगा कि मैंने ये जगह ही क्यों चुनी है। दूसरी बात ये कि वो जब आए फर्स्ट टाइम तो मुझे लगा शायद अब ये ऑर्डर की तरह लेंगे, ये ऐसा कुछ भी नहीं। वो कह रहे हैं वी आर वेरी एक्साइटेड टू सर्व यू, यानी कि हम बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं कि आपको कैसे सर्व करें, आपको कब। तो फिर मुझे हॉस्पिटैलिटी तो बहुत ही कमाल की लगी। वहाँ का एम्बियंस, जाहिर सी बात है हम मौजूद तो नहीं थे, लेकिन जितना देखकर आइडिया लगा पा रहे हैं बड़ा कमाल का था। अब और क्लासीपन तो छोड़ ही दें, अब इतना प्रीमियम और इतना क्लासी मैंने तो कभी इससे पहले कोई रेस्टोरेंट या कोई होटल नहीं 7 स्टार होटल है मेरे ख्याल में। हाँ, 7 स्टार है, इससे ज़्यादा स्टार दे सकते तो वो भी दे देते। ताजमहल तो अपने आप में बड़ा कमाल का है। दूसरी बात ये 7 कोर्स थे। अच्छा, जो भी चीज़ें आ रही थी ज़्यादातर मैंने देखा ड्राई चीज़ें थी। एक होता है ना लिक्विड टाइप, सालन टाइप, तीरा टाइप, वो मैंने देखा इतना ग्रीसी नहीं, इतना ऑयली नहीं। जो भी चीज़ें थी ज़्यादातर ड्राई थी। ऐसा ही है। अच्छा, एक और चीज़ है कि गेटवे इंडिया वो दिख रहा था। जब ऊपर से दिखाया गया तो फिर मुझे उसका नाम समझ आया कि इसे गेटवे इंडिया क्यों कहा गया। आप देखें, अरेबियन सी का एक थोड़ा सा मतलब एक सी साइड था, सी साइड का एक थोड़ा सा एरिया बाहर निकला हुआ है। सही। ये वो एरिया होगा जहाँ किसी ज़माने में जहाज़ आते होंगे और यहाँ से उत्तर के लोग इंडिया में कदम रखते होंगे। ये पहली ज़मीन होती होगी। सही। एक तो सबसे पहले समंदर है। हाँ। बहरा अरब है, कराची का भी है, बम्बई का भी है। तो ये जो चोंच निकली हुई थी ना, इसके ऊपर जहाज़ लंगर अंदाज होते होंगे और यहाँ से कदम रखते होंगे और अंदर जाते होंगे। वहाँ प्रॉपर एक गेट बनाया गया। और वो निशानी है गेटवे ऑफ इंडिया, मतलब वही बनी गया ना। वाकई स्टार्ट है वो इंडिया का, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ से लोग आते होंगे, दाखिल होते होंगे इंडिया में। ज़मीन इंडिया की जो ज़मीन है समझो यहाँ से स्टार्ट होती होगी, तो गेटवे इंडिया का नाम दिया गया। यानी कि इस गेट से आप घर के अंदर दाखिल हो रहे हो। यार ड्यूरिंग द वीडियो इनके बड़े मजे। अच्छा, ड्रेसिंग, इस स्पेशल इवेंट के लिए ड्रेसिंग इन्होंने, मैं कह रहा हूँ नॉर्मल तो इनकी कोई भी ड्रेसिंग, हेयर स्टाइल, मेकअप, ज्वेलरी, इनका तो लुक ही चेंज कर दिया इन्होंने। लुक ही चेंज था, एक सेलिब्रिटी बन गई है। कर्ली टेल्स ऊपर मतलब चैनल का नाम नहीं पढ़ती तो मुझे लगता है शायद हम किसी नए चैनल की वीडियो देख रहे हैं। वो तो बाद में बाय फेस भी मैं पहचानती हूँ। और वो भी बड़ा मतलब एक्साइटेड थी इस चीज़ को लेकर कि यार बड़ा मज़ा आने वाला है। वाकई बहुत मज़ा आया उन्हें, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छी नींद आने वाली है। इनकी अपनी तैयारी बहुत अच्छी थी। इनकी अपना ड्रेसिंग, हेयर स्टाइल, मेकअप प्रॉपर काफ़ी टाइम से प्लान हो रहा होगा ये। अच्छा, एक वीडियो हमने और भी देखी थी जिसमें हमें यही शिकायत थी। वो भी किसी अच्छे होटल में गए थे, 1.5 लाख उन्होंने भी दिया था। वो भी किसी अच्छे होटल में गए थे, कोई राजा महाराजाओं को 3 लाख दिया था। 3 लाख दिया था उन्होंने। तो एक डे एक नाइट का। तो उसके अंदर वो बाकायदा उन महाराजाओं की कार भी थी और अंदर से भी बड़ा अच्छा, बड़ा लग्जरी था।
तो उसके अंदर हमें यही प्रॉब्लम हो रही थी यार, जर्सी और टी शर्ट में चले गए ये लोग, थोड़ा सा मतलब गेटअप करके जाते हैं, तो फिर आपने कहा कि नहीं इनको जैसा रिलैक्स लगा होगा तो ये चले गए होंगे। ये बहुत अच्छा, मुझे ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगी आज वाले ब्लॉग में, हाँ, कि इन्होंने बड़ी प्रॉपर तैयारी के साथ, प्रिपरेशन के साथ रेडी होकर गई है ना, बड़े एहतमाम के साथ। अच्छा फील बड़ा अच्छा आ रहा था फिर इनको देख। अच्छा वो लड़का था, वो लड़के ज़्यादातर ये होते हैं कि चल भाई दे मार। लड़कियां जो होती हैं वो हर चीज़ की प्रॉपर तैयारी करती हैं, वो तो कहीं बाहर भी निकल रही हो, पहले से एक्साइटेड हो गई होंगी ये तो। मैं तो कहता हूँ लड़कियां तो वो हैं कि वॉशरूम भी जाना हो तो मेकअप करके जाए। मतलब लड़कियों ने कहीं भी जाना हो, ज़्यादा हो रहा है यकीन करें, वो भी निकल के मारेंगे आपको। अच्छा लड़कियों ने तो कहीं भी जाना हो, अपने आप को शीशे में भी अच्छी देखना बात है ना, ड्रेसअप करना, ऑर्गेनाइज करना खुद को, अच्छी बात है। तो वो इतने बड़े होटल में भी टी शर्ट पहन के गए, वो मैं कॉन्फिडेंस को सलाम करूंगी क्योंकि वो घूम रहे थे, बेहतर घूम सकते थे। जहाँ गाड़ी में सफ़र भी कर रहे हैं राजा की महाराजा की, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही टेस्ट कर रहा था कि हम भी बहुत ही टेस्टी भी लगा, थोड़ा चख भी लिया हमने, कहीं ना कहीं से फील कर लिया आंखों से। तो दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।